Welcome to another video in the series of atomic physics. In the last video, we've discussed Rutherford's atomic model, how it was contradictory to the classical electromagnetic theory, and what was the explanation Niels Bohr came up with to justify the formation of stationary orbits. In this video, we are going to discuss the spectral series for hydrogen atom. But before getting started with the spectral series, we should have an idea of atomic spectrum, or what we call discrete spectrum. Let's just see what is discrete spectrum. This represents a nucleus. Of course, the separation between energy levels is not uniform as they are not evenly spaced actually, but यहाँ पर it is just to represent an atom for your convenience, right? So we have nucleus here surrounded by orbiting electron. Let's consider this electron which is at some lower energy level. This diagram right here shows that electron in lower energy level will absorb the photon, and if the energy of the photon being absorbed matches with the difference of any two energy levels in this atom, then this electron would jump to that respective energy level, right? यानी photon absorb करके electron transition दे रहा है. And this is another case जिसमें we have an electron in higher energy level and it is unstable और ये किसी lower energy level में transition देना चाहता है. Because this lower level has lesser energy, so this electron is bound to emit or radiate this energy, this excess amount of energy in the form of radiation, because energy can never be created and nor be destroyed. So all in all, lower energy level में एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में ट्रांजिशन दे गया. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में था तो लोअर में आने के लिए इसने फोटोन ऑफ डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल एज पर बोर्स पोस्टुलेट फोटोन रिलीज किया एंड देन वो लोअर एनर्जी लेवल में आ गया. इसका मतलब है एटम कुछ स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है अपर लेवल में जाने के लिए और कुछ स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज करता है या इमिट करता है लोअर लेवल पर आने के लिए. इसके बेसिस पे वी हैव emission line spectrum and then we have absorption line spectrum. By the way, both of them falls into the category of atomic line spectrum जिसको हम discrete line spectrum भी कहते हैं. Let's just see how do we define atomic line spectrum. It is such a spectrum which consists of radiation of discrete frequencies. क्यों discrete? Because energy levels की अपनी कुछ certain values हैं, right? Impression on a screen is in the form of discrete lines on a continuous background. इस केस में black continuous background, इस केस में we have colored continuous background. In emission spectrum, emitted lines appear on black background, whereas in absorption spectrum, absorbed frequencies are absent in the colored background. Spectrum produced by single atom is discrete spectrum. This is why we call it atomic spectrum as well. लेकिन हमेशा atomic spectrum नहीं मिलता, हमेशा discrete spectral lines नहीं मिलती. When it comes to molecular transition तो हमें band spectrum मिलते हैं. When it comes to black body radiation या radiation from the sun या in general कोई भी dense हॉट स्टार उससे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उससे जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती हैं. लेट्स जस्ट सी हाउ डू वी डिफाइन बैंड स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम briefly. Such a spectrum consists of radiation of discrete groups of very closely separated frequencies. Impression on a screen is in the form of bands of colors. Molecular transition से जो spectrum आता है, it is band spectrum. Then a spectrum which consists of radiation of all frequencies within a certain limit. Impression on screen is in the form of single continuous strip without any breakage within it. This is what we call continuous spectrum. और जो हमने black body में देखा था वो भी तो यही था, एक span of frequencies था, एक लार्ज रेंज थी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज, या अगर आपने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ रखी है तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिफरेंट थी, बट वन थिंग फॉर श्योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था, यानी तकरीबन हर रेंज की वेवलेंथ मिट आउट हो रही थी.
Now we are good to start the spectral series. Wavelengths in hydrogen spectrum were found to fall into sets of definite regularities depending on the level at which डाउनवर्ड जंप ends emission spectrum के केस में, या the level at which upward jump starts absorption spectrum के केस में, right? These definite regularities are called spectral series. इन्हें हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन, अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करी तो डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पर इलेक्ट्रॉन ने अपनी ट्रांजिशन को एंड किया है, राइट? एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जिसमें ट्रांजिशन एंड्स एट फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, एनर्जी लेवल 2 से 1 में आ रहा है या 3 से 1 में आ रहा है या 4 से 1 में जंप कर रहा है, इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी उसे हम लाइमन सीरीज में कैटेगराइज करते हैं। एंड क्योंकि इसकी वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अल्ट्रावायलेट रीजन, इसीलिए हम कहते हैं लाइमन सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। इसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, द स्पेक्ट्रल लाइंस कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज बार्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यानी हो सकता है वो थर्ड एनर्जी लेवल से 2 में आ रहा है तो जो रेडिएशन इमिट करेगा, फोर्थ से 2 में आ रहा है तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, फिफ्थ से 2 में, थर्ड, सिक्स से 2 में, सेवन से 2 में, या किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वो सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसे हम बार्मर सीरीज में कैटेगराइज करते हैं। बार्मर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द विजिबल रीजन, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ इमिट होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है, एंड दिस इज द रेंज फॉर विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी तरह वी हैव पैशन सीरीज, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देकर थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है। देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देकर फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है। एंड देन वी हैव फंड सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस टू फिफ्थ energy level. These three lie in infrared region. This is the MCQ from your past paper. आपसे कह रहे हैं ट्रांजिशन से जो हमारे पास रेडिएशन इमिट हुई है वो विजिबल रेंज में लाई करती है, बताएं ये ट्रांजिशन किस स्पेक्ट्रल सीरीज से बिलोंग करती है। सो योर आंसर शुड बी बार्मर सीरीज, नाउ दैट यू नो कि दिस फॉल्स इनटू द विजिबल रीजन। एंड आपसे ये भी कहते हैं कि डिफाइन करें लाइमन सीरीज को, तो आप कहेंगे सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस produced when an electron transitions from higher energy level to first energy level is called Lyman series. And second कर ले तो Balmer and so on. Let's just see, ये तो हमने देख लिया। अब इन respective energy levels की energy को consider करते हुए हम ये कंपेयर करने लगे हैं कि इनकी वेवलेंथ कैसी है। वैसे तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं रीजन स्पेसिफाई कर चुकी हूँ तो अब मुझे पता है कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होती है विजिबल के मुकाबले में, एंड विजिबल की वेवलेंथ कम होती है इंफ्रारेड के मुकाबले में। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि सबसे कम वेवलेंथ इसकी आएगी, उससे ज्यादा बामर की, देन पैशन की, देन ब्रैकेट की, एंड देन फंड सीरीज की। ठीक, लेट्स जस्ट सी, ऐसा ही आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, और फिर विद इन दी स्पेक्ट्रल सीरीज भी कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। पहले हम देख लेते हैं हर एनर्जी लेवल की अपनी कुछ फिक्स एनर्जी है, राइट? विद दिस नेगेटिव साइन शोज बाउंड इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है उसकी एनर्जी को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये डायग्राम शो करिए ना, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया उसकी एनर्जी जीरो हो गई, यानी अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्लियर? लेवल 1 की एनर्जी इज -13.6, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। सेकेंड लेवल की एनर्जी इज -3.40, थर्ड की एनर्जी -0.51, फोर्थ के लिए -0.85 एंड सो ऑन। पहले किसी भी एक सीरीज को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स जस्ट कंसिडर लाइमन सीरीज हियर। Okay, so it is obvious from this figure that these are the spectral lines for Lyman series. See, an electron transitioning from energy level 2 to energy level 1, transitioning from energy level 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1. So, क्योंकि the level at which this jump is ending is fixed to be 1, so फिर these are the lines for Lyman series.
So our objective here is to calculate the wavelength for these spectral lines, and uske liye we need to come up with an expression that relates energy with wavelength. Just recall the postulate from Niels Bohr theory. He said that whenever an electron makes a transition from higher energy level to a lower energy level, photon of energy hf is emitted, right? And then he says that this energy corresponds to the difference of the energies involved in the transition. So now we have an equation in terms of energy and frequency, but we are willing to calculate wavelength, so we must rewrite this equation in terms of wavelength. Since V equals F lambda, in case of electromagnetic radiations, we can write C equals F lambda, right? Because they travel at the speed of light. Then rewriting this equation, this becomes F equals C over lambda. Let's just put in the value of frequency in this equation to write this equation in terms of wavelength, and we'll get hc over lambda equals the difference in energy. Let's just make this wavelength the subject of our equation. So this becomes lambda equals hc over energy. But kyunki this h has the unit of joules into second, right? So this energy has to be in joules. Lekin if you look at the energy level diagram we have right here, तो उसमें energy electron volts में है, right? So we can just directly convert it here ताकि बार बार हमें conversion factor ना लगाना पड़े अलग अलग energy levels के. जब भी हमारे पास एनर्जी जूल्स में गिवन हो और हम इसे कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मौजूद एनर्जी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूनिट ऑफ जूल्स, राइट? तो अगर मेरे पास जूल्स वाली एनर्जी है तो वी कैन राइट इट एज electron volt multiplied 1.6 exponent minus 19. And kyunki this h and c are constant here, so let's just replace the values here. We get 6.63 exponent minus 34, and then for speed of light we have 3 exponent 8. Now just put in these values in your calculator, these three values, right? And you'll get 1.24 exponent minus 6 with this energy in electron volts in the denominator, right? And this is the expression for wavelength in the units of meter. Now that we have a generalized equation, let's just use this equation to calculate the corresponding wavelengths for these spectral lines. So it has been established that difference in energy equals, we were to write it in terms of wavelength, right? So we know that wavelength equals 1.24 exponent minus 6 over difference in energy. If we are to consider the transition from energy level 2 to energy level 1, then we know that energy of level 2 is minus 3.4, that of level 1 is minus 13.6. So their difference is 10.2 electron volts, right? Just put in this difference in this equation. It becomes 1.24 exponent minus 6 over 10.2. Solve this and you will get 121.8, that equals 122 nanometers. Let's just calculate the wavelength for transition from energy level 3 to 1, and the rest I'm sure you can solve at your own. Again, we have expression wavelength equal 1.24 exponent minus 6 over difference in energy. Since we are considering the transition from third level to first level, so we must put in the difference between these two values, because the difference in energy is energy of higher level minus energy of lower level. So we have minus 1.51 minus minus 13.6. This gives us 12.09 electron volts. Just putting this difference in energy in this equation, it becomes 1.24 exponent minus 6 over 12.09 electron volts. No need to convert into joules because conversion factor हम already include कर चुके हैं अपनी equation में. Just divide these two values and you'll get wavelength equals 103 nanometer, right? See,
सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आने के लिए कुछ डिफरेंस ऑफ एनर्जी था, राइट, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ थी। जब हम थर्ड से फर्स्ट लेवल की ट्रांजिशन की बात करें तो क्योंकि ये डिफरेंस इन एनर्जी इंक्रीज हो गया है, तो वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज बैक्ड बाय दिस इक्वेशन एज वेल। एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, एंड वी कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कि जब थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देगा तो वेवलेंथ वुड बी स्मॉलर देन 103 नैनोमीटर। फोर्थ से वन पर आने के लिए मजीद स्मॉल हो जाएगी एंड सो ऑन। अब कोई एक वेवलेंथ बामर सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं टू कंपेयर के लाइमन और बामर के दरमियान वेवलेंथ का चेंज कैसा है, राइट। सो बामर में ट्रांजिशन मस्ट एंड एट एनर्जी लेवल 2, राइट। हमने सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन कंसिडर की कि इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन दे रहा है, राइट। फॉलोइंग द सेम इक्वेशन, थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी इज -1.51 electron volts, that for second energy level is -3.4 electron volts, right? So the difference in energy level becomes 1.89 electron volts. Just putting this value in this equation and we'll get the wavelength of this transition. It is 1.24 exponent minus 6 over 1.89, and you'll get wavelength equals 656 nanometers, right? So it is again obvious कि within the spectral line जैसे जैसे हम higher level की तरफ जाएंगे wavelength कम होती जाएगी, लेकिन जब हम एक spectral line से दूसरी spectral line तक जाएंगे following the sequence Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fund, so next spectral line में wavelength would be greater as compared to that in the previous spectral line। और फिर यहाँ पर हमारे पास बामर में वेवलेंथ क्या आ रही है, इट इज 653 नैनोमीटर। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आएगा कि दिस इज द वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल रीजन, बिकॉज विजिबल रीजन की वेवलेंथ क्या थी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, राइट। सो दिस फॉल्स इन द विजिबल रीजन। और अभी पीछे हम एनर्जी लेवल डायग्राम में पढ़कर भी आए थे कि बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं, राइट। और ये विजिबल रीजन में भी किस कलर से कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, रेड कलर की वेवलेंथ है। You can calculate the remaining wavelengths for Balmer series and then for Passion, Bracket and Fun for your understanding. Let's just look at the figure to see कि जो हमारे पास expression आ रहा है actually भी वही expression है या नहीं। See, this is the spectral line की wavelength depending on energy levels. See, we have Lyman series, हमने अभी कैलकुलेट की थी, फर्स्ट ट्रांजिशन 122 आ रही थी एंड सेकंड वाज 103, एंड देखें थर्ड इज स्मॉलर देन 103, देन स्मॉलर देन 97, देन स्मॉलर देन 95। सो विद इन वन सीरीज जैसे जैसे हम ग्रेटर एनर्जी लेवल को कंसिडर कर रहे होते हैं वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन लाइमन की जो अपनी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है उसके कंपैरिजन में देखें बामर के लिए वेवलेंथ्स आर ग्रेटर। विद इन बामर फिर जैसे जैसे आप हायर लेवल को कंसिडर करें वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, एंड देन सेम अप्लाइज फॉर पैशन एज वेल। पैशन सीरीज की वेवलेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइमन एंड बामर, लेकिन विद इन पैशन सीरीज जब आप मल्टीपल ट्रांजिशंस को कंसिडर करते हैं तो हायर लेवल वाली ट्रांजिशंस की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। I hope this makes sense. This is where we end this lecture. Till the next video, where we'll discuss the quantization of radius. Allah Hafiz.